Hi everyone, so welcome back to the channel Me and He Vlogs. Yeah. Hi. Good evening. तो अभी हमारे सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं कितना 500. 500 तो होने के बाद ये हमारा जो है फर्स्ट वीडियो है। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है रियली थैंक्स टू यू गाइस एंड आगे भी ऐसे सपोर्ट करो। सो चलो आज का फिर ब्लॉग And most इंटरेस्टिंग है। important, हाँ आज भी सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया बिकॉज जो व्यूज आते हैं आई मीन व्हेन वी सी इन एनालिटिक्स सो बहुत लोग आई मीन देखते हैं व्यूज तो आते हैं बट देयर आर नो सब्सक्राइबर्स। जो सब्सक्राइब नहीं किए होते ना उनका व्यू ज्यादा होता है तो हाँ, मतलब so- अगर नहीं किए हो तो आप कर लो अभी जाके। हाँ तो hey स्टार्ट no करते हैं। let's wait for them to subscribe no दे विल तो डू yeah so guys you subscribe so तब तक हम मतलब है नो around 10 seconds I will give you the time and then we'll start the video. या तो आज का जो ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो धीरज विल स्टार्ट नाउ। या सो आज का वीडियो सो एज यू गाइस नो राइट कि हमने आई थिंक इन द लास्ट ब्लॉग वी हैड टोल्ड यू दैट हमने एक न्यू फ्लैट लिया है बैंगलोर में। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक यू नो व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ फ्लैट फ्रॉम द बिल्डर सो वो लोग मतलब आई मीन इट्स अ 2 BHK सो द फ्लैट एंड एवरीथिंग इज एम्प्टी बस दीवार हैं दैट्स इट। तो for that like you know so we'll have to do the home interiors and all. So this video is basically for that only कि home interiors में what are the things that you need to take care you know and so the process like you know ये बहुत ज़्यादा थोड़ा lengthy process भी हो जाता है. So we thought of like we'll inform you like what are the different steps involved in that and you know generally it takes 3 months to on what are the things on which you have to work on with the home interior companies you know just to have the time just to finish your interior within the time limit. Okay वो सब डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपनीज व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन एंड बैंगलोर। अगर जब भी आप होम इंटीरियर्स के लिए चाहते हो तो ऐसे आप किसी की बातों में आके इन्फ्लुएंस हो कि चलो वो बंदा बोल रहा है ये प्लेस अच्छा है तो आप ऐसा कभी मत करना। डू योर होमवर्क, उसका जितने उनके क्या बोलते हैं उसको रिव्यूज हैं उसको पढ़ो, खुद एक्सपीरियंस करो एंड देन उसके बाद आप जाओ। Yeah. See, because you know what will happen is there are many paid reviews also. Okay. एग्जैक्टली So basically we are going to share our experience. So हमने जो भी interiors companies के पास गए, but in this video like you know we are not going to tell you the specific name of that company जहाँ से हम interior करा रहे हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता है, जब तक काम वैसे हो नहीं जाता है तब तक we can't tell you guys, right? हाँ. So guys, I mean in Bangalore right there are many interior companies, home interior companies. तो we also got confused कि भैया जाएं तो कहाँ जाएं because ads and live space and home lane वो लोग I mean they are the brand here, okay, bigger brand than others. So we thought of like we'll go with the live space or home lane because they are the best in the market. Then we thought of like you know let's explore some other options also. So in the process we got some other names also like we went to Bonito also, so that's also there, and then we went to True, okay, TRUWW. Then we went to Housecraft also, and then we also went to Decor Pot also, okay. So ये I mean there's 4 to 5 companies right हम इनके पास गए just to understand the process. So in the process right what we got to know was सबके अलग अलग you know criterias हैं. So when we spoke to them and when we visited their experience center what we found was कि यार everybody is using the same material, okay, same material in the sense I mean everybody have the same options. So Hitachi something उनका ये ले लो, hinges ले लो, ये वो, and then सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के उनके हाँ पास I mean थे। everybody has the same thing. Yeah. The ply also सबका same है, either you go with the Century green ply I mean Sainik, moisture I mean weight like for in the kitchen you use this one, everybody has the same option यार. I mean so what we thought was like कि यार everybody is giving the same material but why there is a difference in the cost. Exactly. Okay. So ये प्रॉब्लम था. See at the end of the day like you know it's not about कि आपने लीव स्पेस से कराया या होमलैंड से कराया या फिर वेंट विद बनीटो और ट्रू व्हाटएवर, ठीक है. वी थॉट कि यार वी आर गेटिंग द सेम मटेरियल, ओके,
द फिनिशेस सबके एक्सपीरियंस सेंटर में ऑलमोस्ट द सेम थे. ओके, फिनिशिंग इन द सेंस एंड ऑल्सो लाइक इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. सो विल डिस्कस लाइक हमारा रिक्वायरमेंट क्या था वो लेटर विल डिस्कस. सो एवरीबडी वाज यूजिंग द सेम मटेरियल, तो हमने सोचा कि यार लेट्स गो, जो हमें कोटेशन चीप दे रहे हैं, थोड़ा सस्ता में दे रहे हैं, लेट्स गो विद देम, बिकॉज मटेरियल वाइज तो सब कोई सेम ही दे रहा सारे था. सेम थे ऑलमोस्ट. हाँ. सो फर्स्ट टाइम हम लोग गए तो सब ब्रांड नेम्स याद करने में थोड़ा मुश्किल हुआ हमें, बट लेटर वी गॉट टू नो व्हेनेवर दे सेड देयर कोटेशन, राइट, वी आल्सो कंपेयर्ड. आई मीन सब कोई तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज यूज कर रहा था. ओके, एंड दैट कंप्लीटली एंड द प्राइस वेरिएशन वहां पे था कि व्हाट मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज. तो उसके हिसाब से आई मीन नो द ब्रांडेड कंपनीज का कोटेशन बहुत ही हाई था. ओके, मे बी लाइक व्हाट आर ब्रांडेड कंपनीज. अब तो इफ यू एक सी, वो कोई खान थी ना, कौन सी उनके ब्रांड के साथ कोलैबोरेट हाँ किया था. या हाँ करेक्ट. सो व्हाट हैपेंड वाज लाइक फॉर एग्जांपल विद द बनीटो दे हैव Yeah. गौरी, दे हैव कोलैबोरेटेड विद गौरी खान. गौरी खान. तो वो लोग बोले कि ना हम आपका डिजाइन गौरी खान से, वी हैव सम ऑफर गोइंग ऑन फॉर 100 ऑफ दिस थिंग, गौरी खान से आपको आपका डिजाइन हम रिव्यू कराएंगे. सो वी थॉट यार मतलब गाइस, डू यू रियली थिंक कि मतलब ऐसा हो सकता नहीं है? नहीं वो लोग कराएंगे, बट यार हमें ना वो ड्रामा में नहीं फंसना यार. वी डोंट वांट गौरी खान टू रिव्यू 5-6 लाख 7 लाख में हाँ. गौरी खान डिजाइन नहीं. नहीं करेगी आपका. नहीं, फॉर श्योर. अब अगर वो करती भी हैं, आई मीन वी आर नॉट इंटरेस्टेड यार. हम Exactly. मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लो भैया. गौरी खान शाहरुख खान से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है. आई मीन एट द एंड यार वी आर पेइंग ना, सो लेट. तो वो सब चीजें थे. एंड देन दे वर आस्किंग लाइक सम मोर अमाउंट ऑफ मनी कि 25K you gave it and all. So I thought like even if they are going with the Gauri Khan review, I mean definitely they are charging for that also, no? Yeah. फ्री में तो कुछ नहीं है. आई मीन Exactly. तो हम सोचे यार भैया हमें नहीं कराना है. आई मीन वी वांट टू सेव आवर मनी, वी डोंट वांट टू गो विद द गौरी खान्स रिव्यू एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो these were the things. Okay, and recently we can see the ads. I think it's Leave Space का है शायद, कि they have collaborated with this cricketer यार, विराट कोहली, विराट अनुष्का कोहली शर्मा. एंड अनुष्का शर्मा. तो भैया ये सब ब्रांड्स एंड ऑल, इसके भी तो पैसे लगते हैं. सो दे आर ब्रांड्स एंड डेफिनेटली दे विल चार्ज, उसके लिए भी दे विल चार्ज सम अमाउंट. तो वी थॉट ऑफ लाइक मटेरियल वाइज सेम है, देन विल नॉट गो विद अ ह्यूज ब्रांड नेम. ओके, हम लोग कोई देखते हैं. आई मीन अभी ज़्यादा कोई, बिकॉज लाइक वही है, फिर पैसे ज़्यादा देने पड़ते. So and also like the timelines. Okay, so I mean these were the different criteria जिसके ऊपर हमने डिसीजन लिया. ओके, सो मटेरियल, ओके, जो हमें मतलब सेम मटेरियल में कोटेशन कम दे रहा है, वी थॉट ऑफ विल गो विद दैट. टाइमलाइंस, द टाइमलाइंस सबका टाइमलाइन सेम ही है, सेम है. सेम 3 months. 3 months में टाइम. एंड अगेन लाइक that depends upon you, because so there are 3 different phases in this. So one is, the first phase is the design part. So in the design part, and the second phase is the production, where they will they most of them have own factory. So once the design is ready, वो factory में लोग produce करेंगे, and then I think and then they will do the installation. So yes, पूरा process was like 3 months. So 2 months and 15 days, and 15 days was the grace period. And on average, like everybody was quoting around 6 to 7 lakhs rupees. So see now, see, I mean if you want to go with the interior, that completely depends, like आपके पास budget कितना है. And even if for interior 20 lakhs बहुत कम पड़ जाते हैं, and even in 5 to 6 lakh you will get इनकी मतलब कुछ लिमिट नहीं है, लिमिट आप नहीं जितना है. करा लो कम या लगेगा आपको. सो व्हाट एवर योर पॉकेट अलाउस अकॉर्डिंगली. तो हमारा जो बजट था, इनिशियली माय बजट वाज 6 lakhs, 6 to 7 lakhs. एंड आई मीन दैट वाज आवर फाइनल बजट यार. शुरू में मैंने सोचा था कि आई थिंक विल डू इट विद इन 5 lakhs, बट लेटर वी थॉट ऑफ लाइक यार 7 lakhs तो कम से कम लग जाएंगे. ओके, सो 7 lakhs में व्हाट वर हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था. So our expectation was in the living area, I mean as soon as you enter in the living area, we have TV unit, so with the paneling. Okay, we have wallpapers, shoe rack and puja unit, है ना. लिविंग में इतना ही था. एंड देन डाइनिंग में क्रॉकरी यूनिट, एंड किचन में like top cabinets and bottom cabinets.
and breakfast counter slabs, and one tall unit, tall unit. and tall unit में ही we thought of like oven का हाँ left. see what happens is like if so हमने क्या किया ना कि one thing what we just to speed up the process because the design process ऐसा है ना that's very much experimental thing so उसमें क्या हो गया ना कि हमने खुद से अपना since कि we wanted to speed up our process okay because अब यार अब एक बार क्या होता है ना अपना घर ले लिया I mean हमने उनको I mean we have already given some amount to the seller okay so the thing is अब हम यहाँ पे रेंट भी दे रहे हैं and then we are giving interest to the bank also तो ये चीज़ें बहुत मन में बुरा लगता है कि भैया घर का इंटरेस्ट अपना अगर बैंगलोर में हो गया and we are giving the interest to the bank but we are living in a rented house in the sense कि हम यहाँ पे रेंट भी दे रहे हैं so हम we thought of like we'll speed up the process तो उसके लिए हमने डिज़ाइन में हमने खुद बहुत सारे वीडियोस देखे and then we ourselves finalized कि हमें क्या क्या चाहिए लिविंग एरिया में क्या क्या होने चाहिए एंड ऑल द बेसिक सेटअप ओके बिकॉज एज आई टोल्ड यू राइट देयर इज नो लिमिट्स तो ये सारे थे एंड देन मास्टर बेडरूम में वी थॉट ऑफ लाइक we'll have workstation and wardrobe and that sliding wardrobe we wanted in our master bedroom वो हमारा requirement था and then window sitting area and cot and all vanity also yeah and cot and all mattress we thought of we'll get it from outside and in the kids bedroom or the guest bedroom also wardrobe normal wardrobe pull out yeah मतलब I mean handle वाला yeah and study area for the kid I mean because tomorrow like that room will be used by our kids only so that's why वो हमने सोच के वैसा किया so यही थे हमारे requirements तो इसके लिए I mean we and material wise वही तो फिर ना I mean from somewhere we got initial 8 lakhs also quotation कहीं से 6 lakhs मिला and then so this was our requirement so finally like we finalized कि भैया हम will from the leave space and home lane यही चीज के लिए we got the quotation was around 8 lakhs 8-9 almost वैसा का more than 80 था शायद and then from other places we got a quotation of 6 lakhs तो हमने सोचा कि यार will not go with leave space and all ठीक है because the material they are using same and 1 lakh आप और एक्स्ट्रा लेके चलो वो आप जो भी फॉल सीलिंग्स में डालते हो ना oh yeah fall ceiling that वो include नहीं था actually I mean 1 lakh not for fall ceiling exactly but electrical work उसमें involved होगा plumbing and all so I mean paintings and all हाँ that will be I mean no outside the scope of home interior basically तो ये प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए फिर ना आई मीन दोस थिंग्स वर नॉट देयर इन कोटेशन तो यार आई मीन ना इट्स ये सब काम ऐसा है ना कि जिसमें ना फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं है ओके तो सो या दिस वाज प्रीटी मच नाउ विल टेल यू लाइक कि डिजाइन फेज में विल डिस्कस अबाउट दिस फेजेस इन डिटेल नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस इज लाइक we don't want to influence others with our decision generally what happens is like once we like suppose we told you like the top names so जैसे हमने homeland से कराया for example like we are not going with homeland first of all and neither this is any sponsored video तो homeland so what people think अरे that guy also went with the homeland तो चलो यार homeland से ही करा लेते हैं because as a newbie or as a new into this interior market I don't know you won't be able to know कि कौन अच्छा है कौन बुरा है because what will happen is you will visit to the experience center आपको अच्छा लगेगा बोलेगा हाँ सही है but the problem is like those experience center you can everybody can build it if you have the money okay but the execution कितना smooth है and then those things जो है मतलब ना that depends upon like the experience altogether okay so I mean at the end like we have already chosen one company तो हम देखते हैं कि वो कैसा काम करते हैं ओके आई मीन अभी तक तो हमें लग रहा है कि दे विल डू देयर बेस्ट बिकॉज हमने भी सोच समझ के ही उनको सेलेक्ट किया है एंड अब तक सब कुछ बहुत सही जा रहा है मतलब जैसा हमारा एक्सपेक्टेशंस था अकॉर्डिंगली सब सही जा रहा है सो अभी लाइक सो विल टेक यू टू दिस प्रोसेस एंड ऑल तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं सो विल गो टू आवर नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे विल स्टार्ट विद आवर एक्सपीरियंस विद द डिफरेंट वेंडर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द Bangalore market for this home interior. So now so we want to give you I mean if you are going with the interior design right so
डिजाइन फेज एक ऐसा फेज है ना जिसमें ना व्हाट हैपेंस इज, आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि ना यू डू योर ऑन होमवर्क। होमवर्क ऐसा होमवर्क करना है लाइक अरे यार आजकल इंस्टा पे या फिर एनीवेयर, आई मीन यू गेट लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स और यू कैन गो टू एग्जैक्टली। पिंटरेस्ट एंड ऑल। सो ना इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि ना मेरे को अपना ये चीजें कैसे अच्छा लगता है। तो कुछ सैम्पल्स आपके पास होने चाहिए सो दैट आप उनको दिखा सको कि हाँ हमारा हाँ, ये रिक्वायरमेंट है, या आउटकम हमारे ऐसे होने हाँ, चाहिए। सो बिकॉज जैसे विदाउट रिक्वायरमेंट, जैसे हम आईटी में हैं, तो अगर विदाउट रिक्वायरमेंट इफ यू डेवलप अ कोड, वो कोड कुछ नहीं होता है, दैट जस्ट अ बग एंड वो दैट विल क्रिएट अ हैवॉक, इजंट इट? सो फर्स्ट अपना रिक्वायरमेंट, वंडरफुल मॉडल। हाँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू गेट योर रिक्वायरमेंट्स डन, रिक्वायरमेंट्स इन द डन कि भैया मेरे को हॉल में लिविंग एरिया में टीवी यूनिट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, एंड यू गेट अ छोड़ थोड़ा सा ना पिक्चर कर सेट कर लो कि ना लाइक टीवी यूनिट कैसा होता कैसा है एंड होना ऑल, चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ कलर्स आपको चाहिए, वेदर यू वांट पैनलिंग और नॉट। क्योंकि ना बिकॉज इफ यू नॉट डू दिस थिंग्स राइट, तो डिजाइन फेज में आप चले जाओगे ना, डिजाइनर बताए कि सर हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा हाँ नहीं, एक्चुअली। एंड इवन इफ उसको आपको समझ आएगा तो आप आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि यार हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एंड देन डिजाइन फेज में ना नोबडी हैज अ कंट्रोल, तो ना वो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो अगर आपका ऑल टुगेदर व्हाट, सो द 3 months एस्टिमेट विच दे गिव राइट, उसमें क्या होता है ना कि 1 month इज फॉर डिजाइन एंड 1 month इज फॉर प्रोडक्शन एंड 15 days इज फॉर इंस्टॉलेशन एंड 15 days इज अ ग्रेस पीरियड। तो सो दैट्स हाउ 3 तो months। 1 सेकेंड, मैंने होमवर्क किया था। हाँ उसने थोड़ा बहुत किए थे। आई मीन हमने, आई मीन इट्स नॉट अबाउट उसने किया था मैंने किया था, हमने थोड़े बहुत होमवर्क शुरू से ही करके गए थे। आज मैंने ऑलमोस्ट सारी फोटोज लेके गए थे, लाइक हमें हाँ ऐसा हाँ चाहिए, या वो सारी चीजें हम या ऑलरेडी करके गए थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो बहुत सारा फोटो वो उसने कलेक्ट किया था एंड तो ये सब चीज़ हम भी करके गए थे। तो करेंटली वी आर, हम हमारा डिज़ाइन फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। So what happens is like in the design phase, first of all they will simply based on a requirement they will create a sketch। सबसे पहले ना एक they will take the measurements of your flat and then they will simply do a sketch, okay। तो स्केच में आप बोलोगे मेरे को टीवी यूनिट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ओके, बिकॉज हम तो पहले से क्लियर थे हमें क्या क्या चाहिए, बिकॉज हमने बहुत सारे स्टडी कर लिए थे पहले। एंड देन उसके बाद से ना she created the sketch and then so how this process works, first of all let me tell you। So the process is like the payment system basically। So payment system works for 10% of the 10% you have to pay for the booking। So once you are done with the booking, फिर they will assign one designer। तो for the, because this is a design phase, तो design phase में once your design phase takes 1 month, once the design phase is done then you will get the, you will have to deposit 40% of the amount of the total quotation, and this quotation things are variable here, and then and after you will sign a contract and then it will go for the production, okay। So design phase में like what are the things you can avoid is ना कि जब आप हमें वो ड्राइंग्स मिल गए, ओके, एंड देन दे विल डू, हमने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, देयर वर माइनर चेंजेस, ओके, देन दे डिड द 3D पेंटिंग, 3D ड्राइंग्स। 3D ड्राइंग्स में एक थोड़ा सा ना अच्छा विजुअलाइजेशन मिल जाता है, एंड देन आफ्टर 3D सिलेक्शन दे विल डू विद द मटेरियल सिलेक्शन। तो मटेरियल सिलेक्शन करने के बाद दे विल रेंडर दोस मटेरियल्स, कलर्स आपने जो भी सिलेक्ट किया है। एक्चुअली वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसा लेते हो, कौन सा सेलेक्ट करते हो, तो उसमें ना थोड़ा आपको मतलब टाइम लग सकता है। या एंड देन मटेरियल सिलेक्शन के बाद दे विल गो फॉर द मार्किंग। तो मार्किंग इन द सेंस दे आपके फ्लैट में जाके दे विल टेक कि चलो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, आई मीन एंड देन वंस द मार्किंग इज डन देन दे विल क्रिएट अ 2D ड्राइंग। सो 2D ड्राइंग्स में सारे मेजरमेंट रहेंगे कि वार्डरोब यहाँ से इतना लेंथ में रहेगा, इतना हाइट में रहेगा, दे विल क्रिएट 2D ड्राइंग्स एंड देन इट विल गो फॉर प्रोडक्शन। तो अभी हमारा आई मीन द मार्किंग इज नॉट डन, 2D ड्राइंग्स आर नॉट डन, सो नेक्स्ट स्टेप इज द मार्किंग। तो वो प्रोसेस होगा। तो ये सब चीज़ों में ना आप देखो जितना बार चेंजेस उनको बोलोगे ना दे आर रेडी टू। एंड वन मोर थिंग इज लाइक इन द ब्रांड्स इफ यू विल गो, हमें एक और मेरे को एक चीज़ मिला था कि इन द ब्रांड्स इन द सेंस इफ यू विल गो टू लिव स्पेस एंड होम लेन, व्हाट दे से इज आप 2 बार अपने डिज़ाइन में चेंजेस करा सकते हो, डिज़ाइनर से मीट कर सकते हो, उसके बाद से अगर आप कराना चाहते हो देन विल हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये चीज़ें हमें लगा भैया ये तो लूट मचा के रखे, हमें सही नहीं लगी ये चीज, टू बी ऑनेस्ट। दो लाइक हमने 2 बार से ज़्यादा चेंजेस नहीं बोले, बट
बट देयर स्टिल इज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है कि अरे यार ये हो, तो वी थॉट ऑफ लाइक यार विल नॉट गो विद देम यार, हु नोज नो। सो बिकॉज इनिशियली हमने आई मीन द टीवी का यूनिट जो हमने सेटअप किया था ऑन अ डिफरेंट वॉल, लेटर वी चेंज्ड इट। तो ये सारे चीज़ें हैं। तो सो बेसिकली ना डिज़ाइन फेज में बहुत सारा टाइम लगता है। सो आई थिंक यू शुड गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर मीटिंग टू द डिज़ाइनर सो दैट यू कैन स्पीड अप योर प्रोसेस। एंड अगर डिज़ाइन प्रोसेस आपका स्पीड अप हो जाएगा ना, देन द अदर थिंग्स आई मीन दो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो यही है। सो आई थिंक सो यही हमारा पर्पस था कि डिज़ाइन आई मीन इंटीरियर रिलेटेड एक छोटा सा क्लिप डाल के आप लोग एजुकेट करना कि लाइक हाउ द प्रोसेस थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड ऑल्सो लाइक हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि लाइक व्हाट आर द अपडेट्स अबाउट योर हाउस एंड ऑल। तो द लोन इज सैंक्शन नाउ, ओके। सो आई थिंक स्टिल वर्क इज अंडर प्रोसेस, तो इसलिए हम वीडियो मतलब शूट नहीं नहीं कर कर पा रहे बिकॉज द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल नॉट डन। हैं। तो बाय दिस एंड ऑफ द मंथ registration हो जाएगा, and then once the registration is done then we'll share you the all the details and all. And so that's it for this video. सो मतलब मेन थीम ये है कि आप किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होके ना, हाँ चलो ये इंटीरियर के पास हम जा रहे हैं तो वैसा गलती ना करें। Do your due diligence, Yeah. थोड़ा reviews देखो and all, and if you want some and see honest comments, honest reviews, you give your comments in the comment section, we'll simply reply you हमारा experience और क्या एनी था। क्वेश्चंस आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते And हैं। guys, I mean once the interior is done then we'll tell you कि हम किसके पास गए and why we went and उन्होंने काम कैसा किया। अगर काम अच्छा किया है then definitely will give us shout out, अगर नहीं किया है then जो भी है हम वो भी बताएंगे, कैमरे के सामने बोलेंगे, हाँ, जो भी हाँ, फीडबैक हाँ, होगा हाँ, उनका डेफिनेटली विल टेल यू। जो होगा सो होगा। एंड गाइस दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, या तो दिस इज एन लाइक या दैट्स इट। सो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड And, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हाँ कर लो क्योंकि ना जाके। 500 तो पार हो गया, नाउ आवर टारगेट इज 1000। 1000 तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, है ना, देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, है ना? और क्या है ना। एंड जस्ट स्टे हैप्पी एंड सेफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। बाय।